हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल, अ गेम मेनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। इस चैप्टर में ये चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे फुटबॉल के बारे में और भी ऐसे गेम्स के बारे में। कुछ गेम्स जो आपने सुन रखे होंगे और कुछ तो आप खेलते भी होंगे। एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ अ गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर फिट। ये गेम से फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें प्लेयर के फिट पाँव की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फुटबॉल, इफ़ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर except the goalkeeper, then this is considered a foul. रूल्स, फुटबॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बॉल किसी के आर्म को, किसी भी प्लेयर के आर्म को टच कर जाती है तो वो फाउल कहलाएगा। सो इफ़ द प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। अगर किसी प्लेयर को फुटबॉल के हाथ में आ जाती है और वो पास कर देता है तो फिर वो आगे नहीं खेल पाएगा, वो आउट हो जाएगा। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी एंड क्रिकेट ऑल्सो हैव द सेम रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। तो हॉकी और क्रिकेट के भी कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये गेम खेले जाते हैं। ईच ऑफ दिस रूल्स हेल्प टू डिफाइन द गेम। ये सारे रूल्स गेम को डिफाइन करते हैं कि आखिर गेम किस टाइप का है। एंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर, और हमारी मदद करता है कि हम एक गेम को दूसरे गेम से डिफरेंस फाइंड आउट करें। As these are the fundamental to the games, we can also call them the constitutive rules of the games. इसी रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी बोलते हैं किसी गेम का। Like these games, a society also has a constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kind of societies. तो दूसरे गेम्स की तरह हमारी जो सोसाइटी उनके भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमको डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे टाइप की सोसाइटी से। इन द लार्ज सोसाइटी इन विच द डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर। सो कुछ सोसाइटी ऐसी भी है, कुछ बड़ी बड़ी सोसाइटी ऐसी जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं साथ में। दिस रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू द consensus, and in the modern countries the consensus is usually written available in the written form. So आजकल जो मॉडर्न कंट्रीज़ में ये जो कॉन्सेंसस है वो अब रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। A written document in which we find such rule is called the constitution. और एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हमको सभी प्रकार के रूल्स मिलेंगे उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। We have looked at the Indian Constitution in class 6 और 7. 6 और 7 में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रखा है इन सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन? क्या आपने कभी सोचा है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है और हम इतने क्यूरियस क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया है एंड हु रोट इट, किसने लिखा है। ऑन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दिस इशू एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम सारे इश्यूज़ को क्लियर करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स है वो भी पढ़ेंगे। ईच ऑफ दिस फीचर इज़ क्रूशियल टू वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, और ये सारे ही फीचर्स डेमोक्रेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ दिस विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक। इनमें से कुछ फोकस है, इस चैप्टर पे हम कुछ पॉइंट्स को फोकस करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। and this chapter is very important for exam point of view.
सो वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है? टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि रिटन फॉर्मेट में है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all the countries that have the constitutions are democratic. So, democratic country के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही होगी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशंस सर्व द सेवरल पर्पस। कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग पर्पस पर बेस्ड होता है। फर्स्टली इट ले आउट द सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म the basic of the kind of the country that we are the citizen aspire to live in. Or put another way, a constitution tell us what the fundamental nature of our society. A country is usually made up of different communities of people who share the certain beliefs but may not necessarily agree on all the issue. हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने बिलीव्स को शेयर करते हैं बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल द इशू। पर वो हर इशू पर एग्री नहीं करते, मतलब जो उनको सही लगता है उस पर एग्री और जो नहीं लगता उसको डिसएग्री करते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन serve a set of rules and principles that all the person in the country can agree upon on the basis of the way in which they want the country to be governed. These include not only the types of government but also an agreement on the certain ideals that they all believe that the country should uphold. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal. अब हम इसको और जानेंगे, जो कोई कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन थी अभी हमारे हिस्ट्री में नेपाल के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। अ कंट्री दैट बॉर्डर्स द इंडिया ऑन द नॉर्थ। एक नेपाल जो कि इंडिया की बॉर्डर पर है, नॉर्थ साइड की बॉर्डर पर है। अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज द मोनार्की। आज भी नेपाल में मोनार्की है। मोनार्की यानी वहाँ पर क्वीन या तो फिर किंग का रोल है, और डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पर हम इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people movement in the Nepal fought for several decades to establish the democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of the king. सो जो नेपाल के लोग थे, जो वहाँ के सिटीजन थे, तो बहुत कोशिश करते थे कि हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेटिक रूल हो। तो फाइनली 2006 में मोनार्की हट के नेपाल में भी डेमोक्रेसी आया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश द नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। फिर वहाँ के लोगों ने एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि as Nepal as a democracy, नेपाल भी अब डेमोक्रेसी है। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they fought for. As in the game of football, in which चेंज इन द कंस्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल्सो। जैसे कि फ़ुटबॉल के गेम में होता है, अगर कोई रूल चेंज किया जाए तो पूरा गेम ही बदल जाता है। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज all its consecutive rules
in order to usher in a new society. तो नेपाल जो मोनार्की था, जहाँ पर मोनार्की की गवर्नमेंट थी, वो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हो गई है, तो वो अपने सारे रूल्स को चेंज करना चाहती ताकि उनकी सोसाइटी में भी चेंजेस आए. दिस इज़ वाई people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2005. So, जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक नया संविधान लागू किया 2015 में. The caption alongside elaborates the Nepal struggle for the democracy. कैप्शन दे रखा है, उसमें बता रखा है कि कैसे लोगों ने बहुत मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी बनाया हमारी कंट्री को, यानी नेपाल को. So, the country of Nepal was witnessed several people struggle for the democracy. There was a people struggle in 1990 that established the democracy that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Jayamantra, setting the Maoist uprising in the countryside as has risen, began taking over the different aspects of the government. With the army assistance, the king then finally took over as the head of the government in February 2005. In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signed at larger public and imminent return to democracy and peace. In 2006, this people movement for democracy began the gaining immense force. It repeatedly refused a small concession that the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament, asked the political party to form a government. In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. The above photo shows the scenes from the People's Movement for Democracy in 2006. The second important purpose of a constitution to define the nature of a country political system. For example, Nepal's earlier constitution states that the country was to be ruled by the king and has councils of minister. पहले जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये था कि नेपाल को किंग रूल करता था. पूरे नेपाल पर रूल जो था वो राजा का था और उसके मिनिस्टर्स का. In the country that has been adopted a democratic form of government or the policy, the constitution plays a crucial role in laying out the certain important guidelines that the govern decisions making within this society. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise the power and responsibly on other behalf. However, there is always a possibility that the leaders might misuse this authority, and the Constitution usually provides the safeguards against this. This misuse of authority can result in the gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. Suresh is the class monitor. He is bully. His classmates are not too fond of him. Mr. Rao, the class teacher, has left the class on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao. But what I have done? When Mrs. Rao enters the class, Ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. Anil, you will have to stay back after class today and will write I will not disobey the class monitor 100 times. But mom did not do anything. In a democratic society,
The Constitution often lays down rules that guard against the misuse of the authorities by the political leaders. In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. Do you recall the chapter on which the Dalit writer Om Prakash Valmiki experienced in the school from your seventh book? And this chapter will talk about the discrimination Om Prakash faced because he was Dalit. You read about how the Indian Constitution granted the right to equality to all the persons and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender, and place of birth. The right of equality is one of the fundamental rights granted by the Indian Constitution. So here are some questions. First one is, in what way is the class monitor misusing his power? किस तरीके से जो क्लास मॉनिटर है अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द मिनिस्टर मिसयूजिंग हिज पावर? इन सिचुएशन में से कौन से सिचुएशन में जो मिनिस्टर्स होते हैं अपनी पावर का मिसयूज करते हैं? फर्स्ट दे रखा है, रिफ्यूज टू सेक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजन. बी, threaten to send his security staff to rough up his neighbor. And C is, call up the police station asking them not to register a complaint that is likely to be filed against his relatives. Another important function that a constitution plays in the democracy is to ensure that the dominant group does not use its power against other. कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे ऑन द लेस पावरफुल पीपल और द ग्रुप्स ऑफ पीपल. द स्टोरी बेस्ड below demonstrate one such situation in the classroom. The games period is about to begin. Let's play basketball today. For a change, no, we will play cricket. The teacher decided to settle the problem with a show of hands. Hee hee. Obviously, there are more boys in the class. Hee hee, we won. We have won. We always have to do what the boys want because they are in a majority. Mom should think of another way to make the decision so that our wishes are also heard. Such unhealthy situation occur in the democratic society too. इस टाइप की सिचुएशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी होती है, where a majority can continuously enforce the decision that excludes the minorities and go against their interest. जहाँ पर जो मेजोरिटी, जिसकी मेजोरिटी रहती है, जिनके पास ज़्यादा पावर्स रहती है, वो उन लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ते जाते हैं. मतलब जो वो चाहेंगे वो ही होगा. सो जो लोअर क्लास पीपल होते हैं, जो माइनॉरिटी लोग रहते हैं, उनको उनका बात माननी पड़ती, जिनके पास पावर्स कम रहती है. As the above storyboard illustrate that the every story is prone to this tyranny of the majority. The Constitution usually contains the rules that ensure that the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or the domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another, such as inter-community dominant, or the member of one community dominating other within the same community, such as intra-community domination. Who is the minority in the above storyboard? इस storyboard में minority कौन है? In what way is this minority being dominated by the decision taken by the majority? कैसे उस minority group के decision को dominate किया गया, नकारा गया, जो majority group के लोग होते हैं उनके decisions के अंडर. सो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं.
The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. थर्ड रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं. दिस may sound strange, but what is meant by this? That we might at times feel strongly about an issue that might go against over the large interest over the larger interest on the constitution help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. Shubnam is in affect. She has a decision to make. I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test. But it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that, I would have the time to finish my revision. Shabnam, why? Why are you looking so worried? I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. It's a good thing I did not watch TV. There are so many questions at the last 2 chapters. Similarly, the Constitution helps to protect us against a certain decision that we might take that could have an adverse effect on a large principle that the country believes in. So कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि अगर कोई एक डिसीज़न सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो तो वो सभी लोग मानते हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज़ प्रोबेबली दैट many people who live in a democracy might come to strongly feel that the political party have become so acrimonious that we need a strong dictator to set the right, swayed by the emotions that may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interest. A good constitution does not allow whims to change its structure. It does not allow for the easy overthrow for the provision that granted the rights to citizens and protects their freedom. From the above decision, you will understand that the Constitution plays an important role in the democratic society. इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में. सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाई वाज शबनम हैप्पी दैट शी हैड नॉट वॉच टीवी? व्हाट वुड यू हैव डन इन द सिमिलर सिचुएशन? आप इस टाइप की सिचुएशन में होते तो क्या होते कि शबनम खुश है कि वो टीवी नहीं देखेगी. क्यों खुश है शबनम, और अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता. लेट अस रिकेप द रीज़न व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी by recalling the consecutive rules that have read about through 3 examples. Examples are: the people of Nepal adopted a new constitution after the success of People Movement for Democracy. What is a consecutive rule? It laid down the ideal that define the kind of country that we want to live in, such as you have to find more consecutive rules of this examples. The second is Suresh, the class monitor, wrongly picked on the Anil, his classmate. Third one is the girl do not get to play the basketball because the boys are in the majority in class. The last one is Shabnam decide to revise her chapters instead of watching TV. शबनम ने डिसाइड किया कि वो चैप्टर्स पढ़ेगी, टीवी नहीं देखेगी. Now, let us try and understand the way on which the above points get translated into the certain ideals and rules by studying some key features of the Indian democracy. I hope you understand all this topic.
The most important topic of Civics Class 8 is the Indian Constitution Key Features. By the beginning of the 20th century, 20वीं सदी की शुरुआत में, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. So जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जो कि कई टाइम से चल रहा था, उनका स्ट्रगल चल रहा था कि वो ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस पा सके, मतलब ब्रिटिश से छुटकारा पा सके, स्वतंत्रता पा सके. During the freedom struggle, the nationalist has devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be. So, जब स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम का जब स्ट्रगल था, स्वतंत्रता का, तो नेशनलिज्म ने अपना बहुत टाइम इसमें दिया. उन्होंने बहुत प्लानिंग करी कि कैसे जब ये इंडिया फ्री हो जाएगा तो हम इसको कैसे रन करेंगे, कैसा लगेगा इंडिया. Under the British, they had been forced to obey the rules that they had very little role in making. So जब ब्रिटिश का शासन था तो उनको वही रूल्स फॉलो करने पड़ते थे जो ब्रिटिश सरकार ने दिए थे. तो अपने अकॉर्डिंग उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थी. The long experience of authoritarian rules under the colonial state convinced Indians that free India should be the democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government. तो उन्होंने बोला है कि सभी लोग इक्वल है और सभी को पार्टिसिपेट करना है इस गवर्नमेंट में. What remains to be done then was to work out the way in which a democratic government will be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of persons, around 300 people who became the member of the Constitution Assembly in 1946, who met periodically for the next 3 years to write the Indian Constitution. So इस वजह से एक पर्सन नहीं, बहुत सारे लोग, अराउंड 300 लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बन गए और फिर 1946 में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गए और 3 साल में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. The members of the Constitution Assembly had a huge task before them. The country was made up of several communities who spoke the different languages, belonged to different religions and had the distinct culture. So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग थे उनके पास बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज फॉलो करते, अलग अलग रिलीजन से है, उनके कल्चर्स अलग है, उनका बिहेवियर अलग है. Also, when the constitution was being written, India got throughout the considerable turmoil. The partition of the country into the India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remains undecided about their future, and the social economic condition of the vast mass of the people appeared small. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining the diversity while preserving national unity. The final document also reflects their corner for eradicating poverty through social economic reforms as well as the emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. Here, the picture of Dr. Ambedkar. Baba Sahib Dr. Ambedkar is also known as the father of Indian Constitution. Dr. Ambedkar believed that his participation in the Constitution Assembly helped the scheduled caste get more safeguards in the draft constitution. But he also stated that although the law might exist, scheduled caste still had the reason to fear because the administration of these laws were in the hands of
caste Hindu officers. He therefore urged the scheduled castes to join the government as well as civil services. Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading this, keep in the mind the above-mentioned concept of diversity, unity, social-economic reforms, and the representative that the authors of the document were grappling with. Try and understand the way in which they try to balance their concern with the communities to transform the independent India into a strong democratic society. The first feature is federalism. This refers to the existence of more than one level of government in the country. ये गवर्नमेंट के एक लेवल से बढ़कर था. In India, we have the government at state levels and at the center. हमारे इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट वो स्टेट लेवल और एक सेंटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट है. पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पर पंचायती राज थर्ड टायर है. And you have read about this in class 6 book. We looked at the functioning of the state government in class 7 book, and this you will read more about the central government. और इस बुक में हम क्लास 6 में आप लोगों ने पंचायती राज के बारे में पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप क्लास 7 में पढ़ा, लेकिन अब इस बुक में क्लास 8 की सिविक्स बुक में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. The vast number of communities in India meant that the system of government needed to be divided that did not involve only the people sitting in the capital city of New Delhi and the decisions for everyone. Instead, it is important to have another level of government in the state so that the decisions could be made for the particular area. इसलिए दूसरा लेवल जो कि था स्टेट लेवल वो बहुत ज़रूरी था ताकि वो अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए डिसीज़न ले सके. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है वो पूरी कंट्री के लिए अपने डिसीजंस पास करता है और सारी पूरी कंट्रीज को फॉलोअप करती है. While each state in the country enjoy the autonomy in expressing the power on certain issue, subjects of the national concern require that all the states follow the laws of the central government. The constitution contains the list that details the idea that each tier of the government can make the laws on. In addition, the constitution also specifies where each tier of the government can get the money from the work that is just. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All the persons in the India are governed by the laws and policies made by each of the 3 levels of the government. इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी को लॉज फॉलो करने पड़ते हैं. जो लॉज और पॉलिसीज गवर्नमेंट ने डिसाइड करी वो हमको फॉलो अप करनी है. अब वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी गवर्नमेंट के लेवल में आते हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और या तो फिर लोकल लेवल. So, when the Constitution Assembly adopted the principle of universal adult franchise, Shri A.K. Iyer, a member, remarked that this was done with the evident faith in the common man and the ultimate success of the democratic rule, and in the full belief that the introduction of the democratic government on the basis of the adult suffrage will bring the enlightenment and the promise that will being the standard of the life, the comfort and the decent living of the common man. The second rule is parliamentary form of the government. The different tiers of the government that you will read about the consist of the representatives who are elected by the people. Your class 7 book begins with the study of Kanta, who was standing in a line to vote during an election.
The Constitution of India granted the universal adult suffrage for all the citizens. Constitution ने universal adult suffrage ग्रांट किया है ताकि जितने भी अडल्ट लोग हैं उनको भी राइट हो कि वो वोट दे सकते हैं. When they were making the constitution, the member of the Constitution Assembly felt that the freedom struggle had prepared the mass of the universal adult suffrage, and this would help them encourage a democratic movement and break the clutches of the traditional caste, class, and the gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in the election. Thus, representatives are accountable to the people. You will read more about why representative is crucial to the democratic functioning in chapter unit 2 of this book. The next is separation of powers. According to the constitution, there are 3 organs of the government. पावर्स का सेपरेशन कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया है. दिस आर द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. द लेजिस्लेचर रिफर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो लेजिस्लेटर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रिफर करता है. द एग्जीक्यूटिव इज द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for implement the laws and running the government. जो एजुकेटिव होता है वो एक बहुत छोटा ग्रुप होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में और गवर्नमेंट को रन करने में. द जुडिशरी ऑफ व्हिच यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस यूनिट 3 ऑफ दिस बुक. जुडिशरी के बारे में हम चैप्टर यूनिट 3 में पढ़ेंगे इस बुक में. रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ द कोर्ट इन द कंट्री. वैसे इन शॉर्ट में देखेंगे तो ये कोर्ट सिस्टम बताता है हमारी कंट्री का. In order to prevent the misuse of the power by any one of the branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers through this. Each organ act as a check on the other organ of the government, and this ensures the balance of the power between all three. Next is fundamental rights. Fundamental rights यानी बेसिक राइट्स विच इज़ बेसिक राइट्स जो कि सभी लोगों के लिए रहता है कि वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन्स को फॉलो करता है. ये जो राइट्स वो सभी के लिए इक्वल है. जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, सभी लोग इक्वल है. राइट टू एक्सप्लोजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, दिस ऑल कम इन द फंडामेंटल राइट्स. So the fundamental rights in the Indian Constitution include the right to equality यानी सभी लोग इक्वल है. राइट टू फ्रीडम, सभी लोग फ्री है. जो उनको काम करना वो काम कर सकते हैं. जो उनको प्रोफेशन चूज़ करना वो कर सकते हैं. जो बिजनेस करना वो बिल्कुल फ्री है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन यानी अगर कोई किसी बंदे को फोर्स करता है या अगर कोई पर्सन किसी चिल्ड्रन जो कि 14 साल से छोटा अगर किसी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है उससे काम करवाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये रूल फॉलो होता है. ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो हम उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है कि हम किसी भी कल्चर को फॉलो करें. एजुकेशन जितना हम पढ़ना चाहते हैं हम उतना पढ़ें. एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो दिस अलाउड द सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है कि अगर किसी भी सिटीजन्स को ऐसा लग रहा है कि उसका कोई भी राइट फंडामेंटल राइट स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही, मान नहीं रही है, मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है. सो ये हर सिटीज़न के पास राइट है. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सभी के पास है. सो and if you have any query related to any topic of this chapter, then please comment in comment section. Thank you. Have a nice day.